dear students, this is Rajeswari and welcome back to my channel or welcome to my channel English with Rajeswari. So in the last video I have completed unit 2 in the prose my greatest Olympic prize. So today I will continue with unit 3. Okay, so unit 3 को जिबा पूर्व unit 2 टिके मने पके दबा. Unit 2 रे कौन थिला ना anger is the worst enemy of an athlete and how Lois Long helped Chse Owens to qualify his jump. तो से केमिति तांकर माने ताको एडवाइस करथिले and how Owens qualified the jump with help of Lois Long and तांको भितरे गोटे फ्रेंडशिप फॉर्म हेतिला एथि पर्यंत जाइतिला. So let's start unit 3. See the page number 53 and one thing remember जेतबेले मु पढ़ाऊँगी बा जेतबेले मु तुमर वीडियो रे तुम क्लास नौची प्लीज ओपन योर बुक एंड लिसन मी केयरफुली एंड हाउ आई प्रोनाउंस द वर्ड्स एंड इफ यू फॉलो दिस यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एंड जोठी तुम्हें प्रोनाउंसिएशन आसुनी तो तुम सेटा को 2-3 थर निजे प्रैक्टिस करिवो. तो जेतबेले मु एटा को पढ़ूची तुम सेटा को सुनो जे हाउ आई प्रोनाउंस एंड ट्राई टू प्रोनाउंस इट करेक्टली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Do you believe in the adage a friend in need is a friend indeed? तो ये जो adage means कौन ना तुम्हें सुनी थी जे प्रोवर्ब गोटे अच्छी जे friend in need is a friend indeed. जो बंधु दरकार बेले बंधु ही प्रकृत बंधु होता है. So read the following unit of the text and note how Owens and Lois Long became good friends. तो से माने केमिति भलो सांगो हेइथिले बा जेमति कि कहा जाय ए ट्रू फ्रेंड इज लाइक ए गार्डियन एंजल. गोटे प्रकृत बंधु ही माने जोटा कि गोटे दरकार बेले बंधु ही प्रकृत बंधु हेइथाय. क्लियर? सो कम टू द टेक्स्ट. दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लोज लॉन्ग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम. दैट नाइट मीन्स कोन ना जो दिन ओवेन्स क्वालिफाई करथिले जंप को एट दैट नाइट, राइट? So that night I walked over to Lois Long's room in the Olympic Village to thank him. तामाने एठी काहेकि से जाइथिले Owens because he was grateful to him and he wanted to thank Lois Long. That's why से दिन राति रे Owens walked over to Lois Long's room. से Lois Long room को गले जोटा कि कोठी थिला ना Olympic Village रे to thank him तांको धन्यवाद जणाइबा पई. I knew that if it hadn't been for him, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. सी एटी कहउचंती जदी तांकू लोज लॉन्ग हेल्प करि न थांते ताहले से केबे भी जंप रे क्वालिफाई करि पारि न थांते. We sat in his quarters and talked for 2 hours about track and field, ourselves, the world situations and a dozen other things. तो सेठी जोठी से गले जे ओवेन्स met Lois Long and they sat in his quarters and talked for 2 hours. 2 घंटा धरी कि से माने दुई जन सहित कथबार्ता हेले को विषय रे ना अबाउट ट्रैक एंड फील्ड खेल विषय रे सेमान को देयर अबाउट देयर लाइव्स तांको जीवन विषय रे एंड द वर्ल्ड सिचुएशन मीन्स अबाउट पॉलिटिक्स और अबाउट वर्ल्ड. तो सब किछि विश्वर परिस्थिति विषय एंड ए डोजन अदर थिंग्स आउ मध्य बहुत टाइप रो कथा हेले. डोजन मीन्स कोन 12. तो तामाने विभिन्न विषय रे विभिन्न टॉपिक विषय रे दे टॉक टू ईच अदर और देन डिस्कस्ड विथ ईच अदर. क्लियर? तो फर्स्ट यूनिट रे फर्स्ट पैराग्राफ रे कोन हैला ना से तांको जाइतले धन्यवाद दवा पई आउ तांकर दी जन को भितरे कथा हला 2 घंटा धरि की ना. When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. तो जेते बेले से Owens wanted to take leave जेतोल से जीवा पई चाहिले तो they both realized that Owens and Lois Long both realized that a real friendship had been formed. तो गोटे सुंदर तांको भितरे गोटे सुंदर बंधुताटे गठन हेई सारिछे. So Lois would go out to the field the next day trying to beat me if he could. तो ता पर दिन they were two rivals, right? For sure माने दी जन जाक दी जनकर प्रतिद्वंदी थिले. But I knew that he wanted me to do my best even if that meant my winning. किंतु ता सत्वे भी लोज लॉन्ग चाहुतले सिए जितंतु बोली. ता माने इटा काहेकि कुहा जायछि जे ताको जितिबा माने कोन लोज लॉन्ग हारिबे. तो
एटा कहिबार अर्थ होला जे तांको भितर एमिति गोटे स्ट्रांग बॉन्डिंग क्रिएट हो सारथिला कि गोटे फ्रेंडशिप एमिति गोटे फॉर्म हो सारथिला गोटे एक्सीलेंट फ्रेंडशिप गोटे क्लासिक फ्रेंडशिप हो सारथिला जे सी तांकर जितिबा पई चाहुथले जेतेबेले कि तारा माने थिला जे लॉज लॉन्ग निजे हारिबे बोली क्लियर एज इट टर्न्ड आउट लॉज ब्रोक हिज ओन पास्ट रेकॉर्ड तामाने जेतेबेले से दिनटा आसी गला द बिग डे केम एंड लॉज ब्रोक हिज ओन पास्ट रेकॉर्ड जेतेबेले लॉज लॉन्ग ता पूर्वरु से क्वालिफाई करथिले तो सेही पास्ट रेकॉर्ड को मध्ये से भांगी देथिले इन डूइंग सो ही पुश्ड मी ऑन टू ए पिक परफॉर्मेंस तो सेटा करि सारला पोरे सी चाहुतुले ही वांटेड ओएन्स टू गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस तांकर मध्ये से बेस्ट परफॉर्मेंस दियंतु पिक परफॉर्मेंस मीन्स कोन बेस्ट परफॉर्मेंस तो ता से निजे क्वालिफाई करि सारला परे से चाहिले जे ओएन्स मध्ये सेथरे बेस्ट परफॉर्मेंस दियंतु आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फॉर माय फाइनल जंप से तोळे मने पकांती जेतोळे से तांकर फाइनल जंप करि सारिले the one who set the Olympic record of 26 feet 5.14 inches he was at my side congratulating me तो जेतेबेले से डेइन सारले तांकर पास्ट रेकॉर्ड को भांगिले 26 feet 5.14 inch जेतेबेले से डेइले वंस he was at my side means Rose Long was at his side and congratulating him with the bottom of his heart से तांको हृदय रु तांको अभिवादन जणाउथले ओएन्स को despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away Loz shook my hand hard and it wasn't fake smile with a broken heart sort of Greek either ता माने कोन ना जेतेबेले से देखुचंती जे despite of the fact that Hitler glared at him तामाने हिटलर तांकु देखुथिबा सत्वे भी तांकु गोटे रागरे चाहाणी दोथिबा सत्वे भी लोज लॉन्ग ओएन्स को अभिवादन जणाउथिले आ सेटा इट वाजंट फेक स्माइल आ एटा केवल देखैबा पई हस नथला ही वाज रियली हैप्पी फॉर ओएन्स से सत्तरे ओएन्स पई खुशी थिले आ ता सहित कोन ना फ्रॉम द स्टैंड्स एंड 100 से ता माने से तांकु कांग्रेचुलेट करथले आ तांको पाखा पाखी हिटलर छेड़ा हेथिले then come to the next paragraph you could melt down all the gold medals and cups I have and there wouldn't be a plating on the 24 karat friendship I felt for Loz Long at that moment so it's really a beautiful line listen it carefully je eti kuha jaichi je you could melt down all the gold medals and cups I have तामाने एठी Loz Long here Loz Long compares their friendship with 24 karat gold काहेकि 24 karat gold is pure gold without any mixture तो सेथरे किछि माने कुआ जाय जे पूरा प्योर गोल्ड तांकर फ्रेंडशिप देयर फ्रेंडशिप इज लाइक 24 karat गोल्ड केमती ना से कहचंदी यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एट कप जदि तुमे सब गुडा को गोल्ड मेडल्स आ कप्स को जदि तुमे मेल्ट करि देबो बा तरळै देबो दे वुडंट बी प्लेटिंग ऑन द 24 karat फ्रेंडशिप तामे एठी कहचंदी 24 karat मींस इज मोस्ट प्योर फ्रॉम गोल्ड जोटा कि सेही समय रे लोज लॉन्ग सेही मुहूर्त पई सेटा को से फील करथिले जे जदि पूरा सबु माने गोल्ड को मेल्ट कर जाय ताहाले भी तांकर प्योर फ्रेंडशिप सहित एटा माने निजो को कंपेयर करछन जे तांको फ्रेंडशिप ता ही 24 karat गोल्ड सहित समान अंडरस्टूड देन आई रियलाइज्ड देन टू that Loz was the epitome of what Prose de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said the important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. तो ये से कहते सेतबेले ओएन्स रियलाइज कले Loz was the epitome of what Prose de Coubertin, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स गेम तने लोज लॉन्ग को ज्वलंत उदाहरण बा बर्निंग एग्जांपल काहे की कहा जायछि ना एपिटोमी ऑफ मींस ला सिंबल ऑफ और एग्जांपल ऑफ गोटे ज्वलंत उदाहरण कहा जायछि कहा सहित ना क्यूबर्टिन काहे की ना क्यूबर्टिन करो तांकर लॉजिक कोन क्यूबर्टिन जे कोंती द इंपोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक्स गेम इज नॉट विनिंग टेकिंग पार्ट तो तांकर आइडियल कोन क्यूबर्टिन करो ना खेल रे बा
जोटा कि जितिबा इम्पोर्टाट नुहे अंशग्रहण करवाटा हूँ इम्पोर्टाट द इम्पोर्टाट ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग जितिबा दरकार नुहे दरकार कौन ना टेकिंग पार्ट अंशग्रहण करवाटा हूँ इम्पोर्टाट द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कंकरिंग बट फाइटिंग वेल तो जीवनर माने इम्पोर्टाट थिंग कौन द एसेंशियल थिंग कौन बा जोटा कि जरूरी कौन दिस नॉट कंकरिंग कंकर मीन्स टू विन तामाने इट इज जितिबा नुह नॉट विनिंग बट फाइटिंग वेल संघर्ष करवा तामाने लाइफ इज लाइक ए स्ट्रगल लाइफ जीवन हूँ संघर्षमय तो ये तुम्हें जितवा इम्पोर्टाट नुहे संघर्ष करके आग को बढ़िया इम्पोर्टाट तो ये लोज लॉन्ग प्रूफ दैट ये सी कहीं कहुए एग्जाम्पल ऑफ एपिटोमी ऑफ क्यूबर्टिन बिकॉज he didn't win the jump right Loz Long didn't win the jump but he congratulated Owens तार ये से कहते अंशग्रहण करवाटा इम्पोर्टाट जितवाटा इम्पोर्टाट नुहे बिकज फाइटिंग हूँ जीवनटा हूँ संघर्षमय किए जितब तो किए हारिबा जितवा हूँ जीवन माने जमती लाइक टू कॉइन माने टू साइड ऑफ ए कॉइन्स तो गोटे मुद्रार जमी दीटा पार्श्व सेमती जीवन हूँ जितवा और हारिबा दीटा जाक दरकार जीवन में बुझीपार तो ये जो कहुए तमें जो कंकरिंग बट फाइटिंग वेल ता माने कौन ये ना एचिविंग ग्लोरी रियली मैटर्स ये गौरव पाइबाटा हूँ मैटर करे तमें आउ गोटे कहुए इट इज इम्पोर्टाट टू ऑल ऑफ अस टू डू आवर बेस्ट सब आमर बेस्ट दबा आम हारू बा जितु से भाविकी जे तार रिजल्ट कौन हम से हारी माने ऑलवेज टू डू आवर बेस्ट तो ये my advice is to all that life is struggle but you should enjoy the whole process तो तुम्हें जो पूरा प्रोसेस टाक एंजॉय करवा उचित तो स्ट्रगल तो लाइफ रे सब बेले स्ट्रगल रहिबो वी हैव टू फेस एनी सिचुएशंस क्लियर तो आउ थे आपको आम पूरा समरीटा कहीदेवा जी मुझे पढ़े देली आउ थे सर्ट रे ताको समरी कहीदेवा दैट नाइट जेसी ओवेन्स वॉकड ओवर टू लोज लॉन्ग्स रूम से लोज लॉन्ग रूम को गले टू थैंक हिम लोज लॉन्ग रूम कौन थी इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम एंड ओनली फॉर हिम यू क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द फाइनल जंप तांको पाई ही से क्वालिफाई होते When Owens got up to leave, he felt that a real friendship had been formed. जेतेबेले से उठी थिले तांको भीतर गोटे फ्रेंडशिप टे गठन हो सारथिला तो ता पूर्व थिला कोन छाड़ दे गल जे बोथ सेट इन हिज क्वार्टर्स फॉर लॉन्ग 2 hours. They talked about track and field, about themselves, the war situations and dozen other things. A real friendship had been formed between the two friends, Loz Long and Jesse Owens. And Loz would go to the field the next day to beat Owens. आ ता पर दिन Loz जिबे ताको बीट करिया पई Owens को फील्ड रे. If he could, जदि से जितिबे he could win मान से जिति भी पारंती, right? But Owens knew that Loz wanted Owens to do his best, even if that meant his winning. तो से जानी थिले जे तांकर जितिबा माने Owens करो Loz Long होची हारिबा, right? Then asila kono na in the final jumps of Summer Olympics 1936 Loz broke his own past record. तांकर past record को से भांगी थिले. It inspired Owens to give his best performance और से तांको inspire करले जे से तांकर best performance दियंतु. He set an Olympic record of 26 feet. से set करले केते Owens by jumping 26 feet 5.14 inches. Then the first person who congratulate him was Loz Long. जे कि प्रथम व्यक्ति थिले जहाँ congratulate करथिले Owens को से थिले Loz Long. And he माने कोन हिची ना he dared to congratulate. तांकर से साहस करके congratulate करथिले he dared to congratulate him even if Hitler glared at them. जदि बा से तांको देखुथिले from the stands not 100 yards away. बहुत दूर रे नथिले से तांको पाखरे थाई कि तांको से congratulate करथिले. Loz Long firmly shook his hand बहुत closely तांको सहित हैंडशेक करथिले and it was not a formal handshake. एटा केवल देखैबा पई हैंडशेक नथला. It's a really माने फ्रेंडशिप, it's a real friendship and माने it wasn't fake. एटा fake
नथले इट वाज जेन्युइन एंड फर्म हैंडशेक एंड गोटे जेन्युइन हैंडशेक था एंड ही रियली कंग्रेचुलेटेड ओवेन्स फ्रॉम हिज बॉटम ऑफ हिज हार्ट राइट क्लियर देन लास्ट पैराग्राफ रहा कौन ना ओवेन्स थॉट दैट सेठी ओवेन्स भाबुथले बा सेई टाइम तांको फील होतला कौन ना द बाय मेल्टिंग ऑल द गोल्ड कप्स एंड मेडल्स गोल्ड मेडल्स एंड कप्स he had one could not plate on the 24 carat friendship that he felt for Rose long at that moment तो सही समय रे सी एमिति फील करथिले जे जदी all the if you could melt down all the gold medals and cups जदि पूराटा को भी तरड़ी दिया जाए one could not plate on the 24 carat friendship केही भी ता उपरे फ्रेंडशिप जो कोटेड फ्रेंडशिप सेटा केही भी ता सहित तुलना करि परिबे नहीं एट दैट मोमेंट्स वेन्स रियलाइज दैट से समय वेन्स रियलाइज कले द लोज वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट पेरी द क्यूर्टिन द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैड सेड अबाउट द स्पिरिट ऑफ द गेम से कौन कहिसंती गेम विषय रे द इम्पोर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग ए पार्ट एंड द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कंकरिंग बट फाइटिंग वेल तामेने एठी कहउचंती जे जयलाभ करवाटा इम्पोर्टाट नुहे इम्पोर्टाट कौन ना संघर्ष करवा बा ये जो कहूँ एटा तमने जो फाउंडर थिले जे आधुनिक ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स प्रतिष्ठाता थिले पेरी दे क्यूबर्टिन जी कि से कहते जे क्रीडा रे अंशग्रहण करवा तो से कह जाऊला लोज लंग को सी होती बर्निंग एग्जांपल ज्वलंत उदाहरण क्यूबर्टिन कर क्लियर तो ये फर्स्ट टू कह व्हाट इज ओलंपिक गेम्स तो जो ये ओलंपिक्स गेम क्या कह तो मुझे माने तुमको कहूँ जे रीड एंड रीड द स्टोरी अगेन एंड यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द स्टोरी जे ओलंपिक द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज इज नॉट द गोल्ड मेडल्स इज द फ्रेंडशिप व्हिच ओवेन्स फॉर्म विथ रोज लॉन्ग तो तांकर बंधुता ही तांको पई ओलंपिक प्राइज थिला सो माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज व्हिच इज रिटन बाय जेसी ओवेन्स ही प्रूव्ड दैट द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज फॉर हिम वाज द फ्रेंडशिप ही फॉर्मड विथ रोज लॉन्ग क्लियर तो आज आमर ये यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 सरीला तो जो पिला माने कमेंट बॉक्स रे कहउछन जे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया पे मैं यूनिट 1 2 3 तक मध्य डिस्कशन करी आ जो पिला माने कहिसंती मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप साम ऑफ द लाइफ मु एट अ टाइम तो डिस्कशन करि परिबी धीरे धीरे गोटे गोटे क्लास रे मु कवर करिबी एंड आई विल डेफिनेटली कवर द होल सिलेबस फॉर योर एग्जामिनेशंस सो डोंट वरी फोकस ऑन योर स्टडीज एंड फोकस ऑन माय क्लासेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विदाउट एनी डाउट और जदि डाउट थी तुम्हें मते ईमेल रे भी मेसेज करि परिबो ता सहित तुम्हें मते कमेंट बॉक्स रे भी मेसेज कर परिबो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ओके थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।